Well, it's time, folks. Fresh new week. We are just excited to get the action beginning. And you guys are watching eISL Season 2 brought to you by Nordwin Gaming. I'm your host, Fixes, joined along with TT. So it's been quite some break, TT. I mean, how did you spend your time? आई वॉज प्लेइंग फीफा स्पेशली एंड उसी के साथ साथ जो वीकेंड लीग चल रहा था उस पर मैंने इस बार बहुत अच्छा किया। वैसे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया। आई नो कि रिलेटिव के प्लेयर्स हैं, सो या मैं तो फीफा खेल के ही मेरा टाइम बिताया। बट एक चीज़ है जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है आईएसएल की तरफ से कि उनके सोशल्स में बहुत इंटरेस्टिंग मीम्स आते हैं, फिर जो हाईलाइट्स आते हैं वो भी देख के बहुत मज़ा आया मुझे। I mean, no doubt. We're definitely going to come back to that. But let's take a look at the format of this entire event once again for all those new viewers who have just tuned in lately, because the old ones, well, they know about it all. So now we are going through with the league stages. It's from 28th February towards, we'll go on till the 26th of April. So quite a long time over there. And then we do have our playoffs where six clubs, just the six clubs out of the 11 will be qualifying. And then whoever wins this tournament, both the players from the championship team get to play the FGS 2023 play-in tournament. And what's on the line in terms of the moolah? If we talk about that, let's take a quick look at the prize pool of this tournament, and it's a massive 33 lakhs, out of which we've got the first position getting 4.5 lakh rupees, the second getting 2 lakh, and the third and the fourth, they will be sharing 75,000 each. हाँ, एंड ओवरऑल अगर बात किया जाए प्राइस पूल की, तो ये बहुत ही अच्छी प्राइस पूल है। बट उसी के साथ साथ सिर्फ प्राइस पूल की अगर बात करें तो ये तो नहीं है, इसके साथ और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को पता चलेगा। बट कहने के फिक्सेस, मुझे लगता है कि जिस तरीके से टूर्नामेंट चालू हुआ है ये धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है डे बाई डे। Oh, of course. I mean, with the way we're watching at all these turnarounds, but let's take a look. Right now, it's finally at the matches that we have lined up for you. And one small update. So today we will just have two games instead of three, and those two games are absolute bangers. And the first one starting off with ATK Mohun Bagan going up against Chennaiyin FC, and for our second matchup, we've got Jamshedpur FC going up against a wounded Bengaluru FC. So that is going to be really interesting. But before we get the day started, let's take a quick look at the leaderboard, because will of course give us much more perspective onto what's happening right now. So ATK Mohun Bagan, they've won a game, they've lost a game, and their opponents over there, well, they have Chennaiyin FC. They, I think, playing after a really long time. We saw them in the first week, and then we saw them taking a big break. And today is going to be their third game where they're yet to find their win, TT. I mean, such a strong team. Defending champion Naveen is playing along with the finalist Karman Tikka, and they are yet to find a break. So hoping so, today would be the day. मे बी बिकॉज एटीके मोहन बगान की अगर बात किया जाए तो इनके तरफ से भी बहुत शानदार गेम हम लोगों को दिखा था। हालांकि पिछला गेम वो हार गए थे, बट फिर भी देखिए इनको उतना इजी नहीं होगा हराना चेन्नई एफसी के लिए। बट लेट्स सी, लाइक आज के दिन पे जो बेहतर खेलेंगे वो जीतेंगे। Of course, and now it's time. Who goes up against who? Let's take a look at the matchups right now. And there you have it, Afnan going up against Karman Tikka. And then we've got Vicky going up against Naveen. So a little bit of a switch up. We've seen mostly Vicky's the one who starts, and the same can be said for Chennai FC. So the orders have been swapped, and for the co-op game. So I think co-op has been one of those departments where I believe ATK Mohun Bagan had fallen off last time, and this time they would be hoping to somehow get through with it, because Crusher and Saki, they absolutely crushed them 3-0. So today they would have worked on, you had that 1 week of gap to prepare, and the same goes for Chennai FC. I think it's more than 2 weeks right now. So they're making a comeback. Let's see what happens. या लेट्स सी कि क्या होता है। मेनली मुझे तो लगता है कि इधर करमन टिक्का की तरफ से और बेहतर परफॉर्मेंस अगर आज आ गया फिर अफनान के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 दिन की अगर बात किया जाए करमन टिक्का ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो आज के दिन का जो पहला गेम है वो होने जा रहा है शुरू। एंड लेफ्ट साइड टू राइट साइड हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे अफनान विद एटीके मोहन बगान, एंड राइट टू लेफ्ट इधर अटैक करते हुए देखेंगे चेन्नई एफसी से टिकट टाउन।
Of course. And, Afnan, we know how much he's evolved as a player throughout the eISL. And right now, with the way things are going on, I think Chennaiyin FC, in fact, Tikka Town, he's been one of those players who has found those successful moments where he's won his games and he's been the reliant one. Whereas Naveen has a little bit of a dip of form lately, but look at Tikka instantly going in through that final third and he scores! Oh! I mean, the game had just begun, and this is classic Tikka display. Instantly just went through, whizzing past the defenders. Nobody could do anything. A little bit of a step over there, and just took the shot. He was confident with Mbappe, that Team of the Year card. It is inevitable that the goal doesn't go in. So, uh, getting that quick success, and Afnan instantly jolted by what just happened. आई थिंक शुरुआत बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ एज ऑफ नाउ फॉर अफनान, बट वी नो कि वो कम बैक तो कर सकते हैं, वो करके दिखाए भी हैं। जो अगर एकदम फर्स्ट मैच की बात करें उनके तरफ से, बट देखिए अटैक बनता हुआ लेफ्ट हैंड साइड से, एंड लेफ्ट विंग को इधर यूज़ ऑब्वियसली किया जाएगा, बट आया टोरे बहुत कम यूज़ होता हुआ दिखा इस पूरे टूर्नामेंट पे। एम्बापे के थ्रू कोशिश था, बट ऑफसाइड ट्रैप पे बहुत पहले ही फंस चुके थे, जिसकी वजह से जो अटैक बिल्ड हुआ था वो अभी टूट चुका है, एंड इस बार बॉल कंट्रोल जा चुका है चेन्नई एफसी के पास। Of course. Now again, with Ronaldinho went in for that step over, got that instant boost, and now would be looking for maybe a cutback. Still trying to find that opening because R9, he had a marker on him, so could not get through him. And like you said, Yaya Toure. I mean, usually we've seen him being used if you're not using a Bellingham, the Team of the Year card, and a few players. I think Shubham was one of those players who liked using Yaya Toure. Whatever rocks your boat. So, I mean, we don't mind because all these players are anyway just too good. But now I think for what we've seen for the past 14 minutes, it's been more of a Tikka show. And not really surprised over here. Now he would be looking for that cutback. Instead, wanted to give it away towards Mbappe so that he could have just easily tapped in. But seems like Afnan had been prepared. But oh, TT, this could have been really, really dicey. बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता था, बट बाल बाल बचे, लेकिन काउंटर में जाने की कोशिश, बट वर्जिल वैन डाइक जब तक है उनको क्रॉस कर पाना बहुत टफ हो जाता है। बट एक चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा देख पा रहे हैं कि चेन्नई एफसी टिकट टाउन शुरुआती में गोल दागने के बाद स्लो डाउन किए गेम को, वो अभी बॉल कंट्रोल पोजीशनिंग के ऊपर ज़्यादा काम करते हुए, बट इस बार विद मेसी रोडोलित के लिए पास देना चाह रहे थे, but interception बहुत बढ़िया। Yeah, I think one thing for sure, Tikka, he's been trying to keep a lot of possession, but those passing moments, that is where he's kind of messing up a little bit. But this one goes out for a corner, and we haven't seen any, long corners being taken, right? It's usually the short corners, then just dribble the ball through, give a back pass, and then maybe try to go for a shot. And Hulit, Afnan would be kicking himself in the feet because there was a moment where he stopped over there, for maybe even for 0.30 seconds, and that was all the difference that had been made over here. Pele, usually we don't see Pele coming in as a starting 11. Most of the players get a sub. But this time, Pele is being used pretty early on by Afnan, and Karman Tikka, he's on route. He's on route to sort of keep that possession game going on. A little bit of an overlap coming in through the left back. Theo Hernandez with Ronaldinho again. Karman Tikka has been keeping the midfield position really well. He's going in, and that final pass in that final third, that is where I feel TT has been making those small mistakes. एंड वही चीज़ जो है इनको थोड़ा सा समझ के खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी अगर आप चांस मिस करते हो तो मे भी बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, बट इस बार बहुत ही एक डेंजरस पोजीशन पे बॉल विन किए हैं चेन्नई एफसी, बट मार्टिनी मौजूद, लेकिन फिर से गलती। ओह माय गॉड! इधर देखिए दोनों ही तरफ से गलतियों का बारिश हो चुका था इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, बट बच गए। आई थिंक मैं तो कहूँगा एटीके मोहन बगान एंड अफनान थोड़ा लकी थे कि उधर गलती टिका टाउन की तरफ से भी हुआ, क्योंकि अगर नहीं करते वो गलती तो शायद एक और गोल आ सकता था।
I think Tikka just tried to play it a little bit safe over there, Hmm. right? Because honestly, he could have maybe taken a shot from that left foot, right? Because this card of Ronaldinho, no matter if does not have that five-star weak foot, but still is an amazing card nonetheless. Could have just gone for it and hoped that it got converted. Could have built up a really good cushion on himself. But for now, as things are, I mean, Tikka, he's just constantly keeping the press up. And this time, we had not just one, but three defenders charging towards that R9. And now, as you can see, the defense line had been brought pretty high up, as a result of which, this is a beautiful driven through pass. And now let's see if Theo Hernandez can give the right amount of passes. And there he takes that shot. Afnan will not miss this time as ATK Mohun Bagan, they equalize. वाओ, बहुत शानदार 1-2 करते हुए इधर हम लोगों को देखने के लिए मिले एटीके मोहन बगान। एंड अफनान को ज़रूरत भी था कि कुछ इस तरीके से क्लिनिकली वो फिनिश करे, एंड उन्होंने किया। बट इधर टिका डाउन कोशिश कर रहे थे कि एक थ्रू लॉ बॉल खिला के आगे लेके जाएंगे रोनाल्डो को, बट वो नहीं हो पाया। एंड इतना इजी नहीं है ऑब्वियसली, लाइक कोशिश तो अच्छा था, बट इतना इजी बिल्कुल भी नहीं है कि आप जस्ट एक गोल स्कोर कर दो फिर से। थियो हर्नांडेस। एंड ओवरऑल अगर बात किया जाए अभी तक जो चांसेस मिले हैं टिकट टाउन को, वो अगर कन्वर्ट करते तो शायद एक से ज़्यादा गोल हो सकता था। Yeah. तो अभी ये वन हॉल होने के पीछे भी लाइक उनकी गलती भी बहुत सारा हम लोग को देखने के लिए मिला है, बट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे बॉल विन किया चेन्नई एफसी। रोनाल्डिनियो, बट हकीमी इतना फ्री रन तो नहीं लेने देंगे रोनाल्डिनियो। I mean, I think one thing we can both agree on is Afnan has been looking really strong on those counter attacks, because we have seen Tikka on multiple occasions get his defense line pretty high up, as a result of which the previous goal was scored. Now, there is also another chance in the making, beating and finding Mbappe, but then Mbappe pretty much out of options. Look at the number of defenders, wanted to go for a heel to heel. The idea behind that was right, because the angle he was in, that's a perfect one for a heel to heel, and he did that also. But the defenders were kind of prepared, were anticipating that. And with that being said, we've reached the halftime mark, and both these teams are equalized, and nothing really to set them apart. You know, ATK Mohun Bagan did a really good job of reclaiming that possession percentage in their favor in those final few moments. And Chennaiyin FC, after that first hint of success, TT, they've kind of looked a little, how do you call it, a little erratic, because Tikka had built up so many chances, but if you talk about converting them, he failed. एंड ये चीज़ उनको बाद में पता चलेगा ऑब्वियसली, जब इस मैच के एंडिंग के मोमेंट पे आ जाएंगे। अभी भी हालांकि बहुत टाइम है उनके पास ऑब्वियसली कि वो इधर से स्कोर कर पाए, बट उनको मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर रिलीज करना होगा अपने ऊपर से, क्योंकि जब उन्होंने गोल कंसीड किया उसके बाद से एक बार भी प्रॉपर पासिंग उनकी प्लेयर्स के अंदर नहीं देखने के लिए मिला है। सो गलत पासेस हो रहा था। मेसी के जगह पे पेले को लेके आए हैं, सो हाफ टाइम पे ही ये चेंज देखते हैं कितना काम कर पाता है फिलहाल के लिए। बट रूड हुलीद के साथ बॉल ड्राइव करते हुए टाइम ले रहे थे, देखिए एक बार फिर से एक गलत पास, हालांकि थोड़ा प्रेशर ज़रूर था पास के ऊपर, एंड उसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से, ओह माय गॉड, राइट हैंड साइड पे इधर खिला दिया जा चुका है। अफनान काफ़ी बेहतरीन विजनरी परफॉर्मेंस इधर दिखाते हुए, Wow. जिस जगह से ये शॉट उन्होंने लिया देख के लग नहीं रहा था कि वो शॉट लेंगे एंड वो गोल पे फिनिश होगा। Unexpected. I have no idea, TT. How could he just make that pass over there? And the run was so perfect. Everything just aligned for Afnan. And we've seen, especially after Afnan conceded that first goal, he suddenly had a change in his behavior, and he was being very cautious with his plays. He was just waiting for those counter-attacking opportunities. And now, seems like he's started to take control over the entire game, and Karman Tikka looks flounded with what's happening with him. And at this point, he needs to do something out of the box, something that Afnan hasn't been expecting. And maybe with this German cross, and we'll take the shot, and there you go, an equalizer coming in.
with Mbappe yet again. A brace for this player. And just when we were ruling Karmantik out, we were hoping that, yeah, maybe our boy Afnan, maybe he's sees control over the game. Karmantik says, nah, not so easy. यप बट जो कमबैक आया वो बहुत इंपॉर्टेंट था एंड आई थिंक इस बार जो गेम है वो धीरे धीरे एंड टू एंड होता जा रहा है शुरुआती में फर्स्ट गोल स्कोर करने के बाद कमर्टी का कोशिश यही कर रहे थे कि वो बॉल पोजीशन ज़्यादा रखे एंड सेम चीज़ हम लोगों को अफनान की तरफ से भी दिखा बट फर्स्ट हाफ के बाद कहीं ना कहीं गेम का जो रुख है वो बदल चुका है पासिंग ऑब्वियसली हो रहा है लेकिन वो सिर्फ अपवर्ड्स जो है वो पासे ज़्यादा खेल रहे हैं बैकवर्ड उतना ज़्यादा नहीं खेला जा रहा बट एज ऑफ नाउ रोनाल्डिनियो प्लेयर लॉक किया जरूर गया बट डबल प्लेयर चार्ज बट फिर भी बॉल जीतते हुए थियो हर्नांडेज फुल्ली पेस से एक्सप्लॉइट कर चुके हैं विंग को वो इधर ऑफसाइड नहीं थे एंड उसी के साथ एक और गोल चेन्नई एफसी मुझे तो लगा था शायद ये ऑफसाइड होगा Oh, can't really believe what's going on in this matchup. Carbon Tikka has definitely got the party in. And we did have a quick look at the formations, right? So Afnan's gone for a 4-1-2-1-2. And we have seen, not the meta formation, but a lot of professional players usually prefer that. Whereas Tikka down, he's just gone a little safe 4-3-2-1, the meta. We have seen a lot of players also, in those dying moments of the game, kind of resort to that 4-2-4 formation where you've got four players going on attack. So that really helps, with that kind of constant press. You can always keep you have to be on toes. But now, things have changed. But you know what, TT, I still feel Afnan can make a comeback. And Tikka down, he's definitely one of the favorites to win this game, and he's playing exactly like that. Just when we thought that, Tikka is doing things that are quite, readable, that are quite anticipated, then he suddenly, delivers a German cross, which Afnan did not see from miles afar. And when you have a player like Ruud Gullit over there to receive it, an instant receive, then a pass on, and this particular goal, a beautiful player lock in, ball roll and pass. But now Afnan was almost on the brink of maybe getting that equalizer again, but that certainly won't be the case. या बट इधर एक चीज आप देख सकते हैं कि थियो हर्नांडेज को बहुत ज्यादा ऊपर खिलाया जा रहा है जिसके थ्रू लेफ्ट साइड पे एक अटैकिंग ऑप्शन बनता हुआ दिख रहा है हकीमी ऑन द अदर हैंड वो मिडफील्ड तक जा रहे हैं बट एकदम पूरा ओवरलैप पे नहीं निकल रहे हैं बट उसी जगह पे एम्बापे अपने फुल पेस के साथ जाते हुए एक टच नहीं पास नहीं खिलाए डायरेक्ट शॉट के लिए गए एंड वो सेव भी हुआ बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया था बाय द वे एंगल इसके वजह से नहीं कर पाए थे कन्वर्ट बट चेन्नई एफसी सेकंड गोल के बाद से बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं Yeah, and again a driven through pass by Afnan with Ruud Gullit, goes for a ball roll, needs to take that pass, but out it goes for a corner. So it is end-to-end action, and this is how we are starting off our week. I love this. And ATK Mohun Bagan still trailing by one goal, but we also know in the realms of FIFA, one goal really means nothing. As now a beautiful Trivela attempt. And almost had gone through. It was even green timed, for Christ's sake. And I do not know. Afnan must be absolutely gutted at this. Now we've got Tikka with Mbappe passing on towards R9 with Bellingham. Wanted to go for the heel to heel. Did go. Take the shot also. Goes out for a corner. Oh my goodness, City. This is some action. And no, yeah. I mean, I'm kind of left off this time. I wanted this to go on, but sadly, viewers, technology sometimes, or rather most of the times, is failing us. And I mean, production will be benevolent enough to give us the results once they're out. But I really wanted to see how this was going to end. Now it's time to predictions. Do you think ATK Mohun Bagan, being an East Bengal FC supporter, can make a comeback in this match? By the way, ये नहीं बोलना था. I had to put you on the spot. But देखिए, अगर मैं ईस्ट बंगाल एफसी को साइड में रख के बताऊं तो आई थिंक उसके बावजूद थोड़ा टफ है
क्योंकि जिस तरीके से चेन्नई एनएफसी परफॉर्म कर रहे थे, टिक्का टाउन जिस तरीके से अभी खेले एंड पिछले मैचेस में जिस तरीके से परफॉर्मेंस उन्होंने निकाल के लेके आया था, उसके ऊपर अगर मैं देखूँ तो या वो शायद इस मैच में जीत जाते, बट अगर ऑल ओवर सीरीज का हो वो तो हम लोग बाद में देख नहीं पाएंगे, लेकिन इसके बाद 2 मैचेस और भी है। बट मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर बहुत शानदार खेल रहे थे एंड जो ट्रेवेला लिया गया था वो माल्डिनी की तरफ से लिया गया था। तो अगर उस जगह पे कोई भी और रहते लाइक काइंड ऑफ अगर अलोवायरन हो गए, मेसी हो गए या फिर एम्बापे हो गए या फिर कोई भी स्ट्राइकर अगर रहते तो शायद उसको गोल जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर सब जो है वो 50-50 हो सकता था, बट अभी तो मुझे लगता है कि शायद चेन्नई एनएफसी जो है इस मैच को निकाल के लेके जा सकते हैं, जिस तरीके से वो प्रेशर बना के रखे थे अभी तक। Oh, but I have to feel bad. I mean, when FIFA 23 really came out, Trivela was like the go-to shot, right? It's a guaranteed goal. You just have to green time it. Even I'm telling you, I've seen reels and all those shots on YouTube where people were scoring with their goalkeepers. They used to charge their goalkeepers just outside the box and take a Trivela, and that used to go in. So even if it was like the worst player, also if you just green time your Trivela, somehow it used to go in. And this time, I think Afnan was a bit tad unlucky. Like maybe had the power been just a little bit less because it hit the crossbar and it was the perfect dip. Uh, Gotta feel sad for him, but yes, Tikka Town. He first he starts up, opens up with an amazing goal. Then we see Afnan slowly, surely taking over. But then Tikka does the unthinkables, right? He goes for a German cross. Then he uses those player locks. He one thing you also pointed out, and which was quite right, PD, was the fact that he's getting his left back on his overlap. And this is one of those things that you tend to do on 4-3-2-1, where you have one of your fullbacks going in and pressing with the attack. You give that instruction where you need to overlap and go ahead. Whereas you get your right back, or it's the vice versa, right? One of your fullbacks is usually the one going ahead. And even we saw in that second goal, I think it was his right back only who managed to give a German cross towards Ruud Gullit. So Kamantika had been the more creative player, whereas I would still say Afnan, he's been relying on those counter attacks. A lot of those driven through passes that have been given by him, and it was going to be an end-to-end matchup. Sadly, this thing stopped for us. या लाइक फर्स्ट हाफ की अगर बात करें, फर्स्ट हाफ बहुत अलग था। एकदम टिपिकल पासेस चल रहे थे, पोजीशनिंग रखा जा रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से लाइक हाफ टाइम के बाद वो दोनों ही मतलब क्या डिस्कशन करके आएंगे अपने टीममेट्स के साथ वी डोंट नो, बट जिस तरीके से पूरा मोमेंटम चेंज हुआ और इतना ज़्यादा फास्ट गेम चालू हो गया। देखिए पासेस तो खेल रहे थे, बट जैसे कि मैं पहले ही भी लाइक बात कर रहा था कि जितने भी पासेस थे वो अपवर्ड्स जा रहे थे। ज़्यादा हम लोगों को पीछे पास करते हुए नहीं दिखे, जो कि हम लोगों को फर्स्ट हाफ से दिख रहा था कि वो अपने डिफेंस को भी इन्वॉल्व कर रहे थे अटैक के ऊपर, ताकि वो मिडफील्ड के साथ डिफेंस का कनेक्ट करके फिर डायरेक्ट कभी कभार थ्रू बॉल भी खिलाते हुए दिखे थे फर्स्ट हाफ के ऊपर। बट वो सेकेंड हाफ में नहीं हुआ था। उनके जो सेकेंड हाफ का गेम था वो मिडफील्ड से डायरेक्टली वो अपने अटैकिंग थर्ड जो अपने फॉरवर्ड्स हैं उनके साथ कनेक्ट करके फिर आगे जा रहे थे। तो इसी वजह से ज्यादा डायरेक्ट लग रहा था गेम, एंड इसी वजह से शायद गैप भी बन रहा था और गोल दोनों ही तरह से कंसीड कर रहे थे। बट आई थिंक फिर भी मुझे लगा कि चेन्नई एनएफसी के तरफ से मेनली टिक्का टाउन जिस तरीके से वो अपने थियो हर्नांडेज को चढ़ा के रहे थे ऊपर, जो लोग कहते हैं यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड से, उनको ओवरलैप पे भेजे थे। एंड हकीमी को भी ओवरलैप पे रखा गया था, बट जॉइन अटैक का जो इंस्ट्रक्शन है वो नहीं दिया गया था। तो इसी वजह से जब जरूरत हो रहा था उस टाइम पे हकीमी जा रहे थे, बट जब जरूरत नहीं हो रहा था तब वो नीचे रह रहे थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा कहने की स्टैट हम लोग कह सकते हैं। तो इधर आई थिंक मुझे लगता है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, जो लोग फीफा खेलते हैं, तो उनको तो ये देख के एंजॉयमेंट तो होगा, बट सीखने के लिए भी आई थिंक बहुत कुछ है, जो कि हो सकता है कि नेक्स्ट साल आप भी हमारे साथ इधर हमारे सामने रहो। I mean, for me, it's personally, I don't know if I can go up against them, but yes, you guys. I'm pretty sure the ones from the community that are watching, like a lot of people played actually. A lot of even players who participated in the last time eISL also did participate this time also, but they could not make it through the qualifiers. Such as the competition level, the standards of the game has improved that, a little bit of a hit and miss, and then you're just out of this tournament. And it's kind of in one way a good thing that we are finally getting to see all these new talents also come up, and a few talents that had missed out on the last season's CISL due to a lot of other reasons.
this time they're getting a chance. So I see all those old players also coming back, with Charanjot, who has got a matchup next. And then you also have Crusher, even Vicky. As a matter of fact, we have seen him in the other tournaments outside and had missed out on eISL. Genesis being such an amazing revelation this time around. And the past week had also been really interesting one, where we saw Charanjot taking a loss, even Genesis had to sweat it out. So a lot of things were going on, and this kind of shows us one thing, that none of these teams are, you can say, are completely invulnerable, or let's say invincible, right? Everybody is sort of giving their matches away. Sometimes they're losing it, but well, there you have the final result. So in those dying moments, we did not get to see goals being scored, but Chennaiyin FC, they're off to a good start. They've managed to win that game. All they have to do is now win the second game and take those 3 points home. जी हाँ, शुरुआत काफी अच्छा रहा चेन्नई एफसी के तरफ से फॉर श्योर, बट इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है कोऑप मैच। एंड कोऑप मैचेस की अगर बात करें तो एटीके मोहन बगान के लिए जो सिचुएशंस हैं वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डाइसी भी दिख सकते हैं। हालांकि अगर उनकी बात करें पिछले मैच की, तो वो लाइक 3-0 से हार गए थे क्रशर एंड सैकी से, जो कि लाइक मुंबई सिटी एफसी के साथ गेम हुआ था उस पर। तो अफनान एंड विकी के बहुत सारे जो गलतियां हैं वो हम लोगों को देखने के लिए मिला था। सो अभी जो उनको एक छुट्टी मिला था, काइंड ऑफ जो गैप उनको मिला था, क्या उस गैप पे वो अपना पूरा कोशिश करके आए होंगे? क्या वो प्रैक्टिस किए होंगे एक साथ या फिर नहीं, वो अभी देखना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। Oh, yes. And this is what I was telling. Now, how did that goal just, the ball get passed through over there? He found that opening and capitalized. And now look at this with Hakimi. Look at how he had made a run with Rudullet. And that's the beauty of that goal. I mean, Mbappe, he did not have to do much. All he had to do was just be there at the right spot and take a shot. And Carmen Tikka completely just being so crafty. And this goal, again with Theo Hernandez. We were seeing that he was making those runs with Theo Hernandez multiple times. And the team of the year card has blistering pace. And this one, when we thought that maybe Van der Sar did his job, but felt like, did not catch the ball, and a little bit of a loose ball there, and Mbappe had no problems just poaching that and scoring. And with that, not just got his hat-trick over there, also Tikka Town managed to edge past Afnan, but it was a close game nonetheless. फॉर श्योर। एंड आई थिंक जो नेक्स्ट गेम है ये डिसाइडर होने वाला है एक तरीके से, क्योंकि हम लोग पिछले गेम्स की अगर बात करें जिस पे ओवरऑल पे, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि अफनान एंड विकी का लाइक जो कनेक्शन है वो कनेक्शन उतना ज़्यादा हम लोगों को बनता हुआ नहीं दिख रहा था, उतना ज़्यादा बेहतर। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करते हैं टिका टाउन एंड नवीन, इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा केमिस्ट्री देखने के लिए मिला है। सो दोनों तरफ से पूरा इधर उधर जा रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है इस गेम पे। Yeah, but before we have the second game beginning up, we have some interesting, stats for you. And right now, let's take a look at the, top 5 saves of last week and see who were those ones making those important saves with their goal keys, as it is going to be in front of your screen just about now, any time. या लाइक उस जगह से वो ज़रूर बाहर भी बॉल को पुश कर सकते थे, बट वो हुआ नहीं था।
बट आई थिंक बहुत जल्दी हमारा जो को-ऑफ गेम है वो भी इधर आता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सो बहुत जल्दी इधर को-ऑफ गेम आने वाला है आपके सामने, जिधर अगर हम लोग बात करते हैं स्टैट्स की, तो स्टैट्स के हिसाब से तो ऑब्वियसली जिस तरीके से अभी तक टूर्नामेंट चला है उसमें चेन्नई एफसी थोड़ा सा आगे है। बट ऑन द अदर हैंड हम लोगों को ये भी देखना होगा कि क्या मोहन बगान कमबैक कर पाएंगे कि नहीं आज के दिन पे। सल इधर देखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। बात कर ही रहे थे, उसी के साथ आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है आज का मैच नंबर 2 एंड गेम नंबर 1 मैच नंबर 2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैच होने जा रहा है, क्योंकि अगर इधर कुछ भी गलती हो है एटीके मोहन बगान से, सो उनके हाथों से ये 3 पॉइंट्स चला जाएगा। ऑलरेडी वो एक जीते एक हारे हैं। आज अगर वो हार जाते हैं फिर प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। बट इधर स्टार्टिंग पे ही अगर देखा जाए, बॉल कंट्रोल प्रॉपरली अपने पास रखते हुए लेफ्ट टू राइट अटैक करते हुए दिख रहे एटीके मोहन बगान, राइट टू लेफ्ट व्हाइट जर्सीज पे दिखते हुए इधर चेन्नई एफसी। रोडोलिट से एम्बापे, मौका बन रहा है लेकिन सही टाइम पे बेलिंगम अपना काम करते हुए। कुछ भी अगर गलती होता है इधर फॉर श्योर वैंडेसार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। तो स्टार्टिंग में यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप पासेस के साथ शुरू करते हो उस टाइम पे अगर आपके पास ही बॉल कंट्रोल रहता है, वो आपका एकदम आइडियल टाइम है जब आप अटैक पे जाओ एंड गोल स्कोर करने की कोशिश करो। बट इस बार काउंटर में आ चुके हैं चेन्नई एफसी एंड उनके पास एक बहुत शानदार मौका बनता हुआ। I mean, Chennai FC and especially Naveen, he's got a lot to prove. He's got a crown on his heads, and a lot of them are challenging for it. And hasn't really had the best of the days, but maybe hoping that he could change it all with this one. And Mbappe, a little bit of a ball roll, and now he's gone for a shot with Ronaldinho, and Chennai FC strike again. With a crabby finish, and yeah, I think that was very well executed, a very calm and composed finish, and such a nice opening, by our lovely Naveen, the defending champion of the previous year's eISL, who's had a really rough start into his campaign this time around, but now things are looking a little different, and in this co-op game, anything could happen. Naveen and Tikka, both these players, as you can see, that now as things are, that they've kind of settled in. Now they've gotten over their jitters. All they have to do is just win this one game, and things will be set. इधर आप देख सकते हैं कि आखिरी मोमेंट तक एटीके मोहन बगान के प्लेयर को पता था कि वो पास खिलाने वाले हैं, तो इसी वजह से पुश उन्होंने नहीं किया और आखिरी मोमेंट पे आके वो पास खिलाया भी गया। ये देखते हुए भी वर्जिल वैन डाइक उधर मौजूद थे। तो यही होता है कि आप साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आप डाल सकते हो। ये गेम लग सकता है कि सिर्फ कंट्रोलर लेके बैठ जाओ, बट देखिए अटैक बन रहा था बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे, इधर इंटरसेप्ट किया गया। बट या जो बात कर रहे थे कि सिर्फ कंट्रोलर लेके बैठ के नहीं होता, इधर बहुत ज्यादा माइंड गेम की जरूरत होता है। एंड ये सब कुछ जब आपका एक साथ चलेगा उसके बाद ही आप एक प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हो। What? Oh my God! What was that, TT? I still cannot believe. This has to be one of the most beautiful goals we have seen in a long, long time. Who skipped that replay? I want to see it yet again once more. I mean, the sheer opening he found, those skill moves towards those end, everything just perfectly aligned. And I must say, so far has been the goal of the day for me. Yeah. बहुत शानदार गोल था। एटीके मोहन बगान को जरूरत भी है कि वो अभी स्कोर करे, क्योंकि उनका कोऑप गेम उतना खास नहीं गया है और ये गोल उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा आज के इस मैच पे। और उनके लिए तो मस्ट विन मैच है, और अगर कम से कम सेटल भी करना है तो उनको ड्रॉ के साथ करना होगा, क्योंकि नहीं तो और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं रहेगा इस मैच के अंदर। ये मैच अगर ड्रॉ होता है तो सिर्फ एक ही चांस रहेगा कि वो एक पॉइंट इधर से निकाल के लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर जीतते हैं तो उनके पास इस पूरे गेम से 3 पॉइंट्स निकलने का ही एक अपॉर्चुनिटी है। थ्रू खिलाने की कोशिश था बट इंटरसेप्ट हुआ। अभी भी एम्बापे
खतरा नहीं टला। फाइनली जाके हकीमी की तरफ से बॉल छीना गया एंड इस बार अटैक पे जाते हुए दिखेंगे एटीके मोहन बगान। Yes, and there you could see already R9 had made that run, but a driven through coming again. This is classic of Nan on display, but Mbappe, a rare sight to behold. You know, usually you don't see Mbappe taking such heavy touches like that where it kind of goes away. But, you know, ATK Mohun Bagan, after again conceding that one goal, have made such an impeccable comeback. And the supporters must be elated by how they have been playing, especially considering how dreadful their last year's campaign was. They finished on bottom and now they have already won one game, and the other one had been a loss. So this is where they would want to be on the positive side of things, the third game. So let's see, as Chennaiyin FC, they have started building possession and are trying to get for the attack yet again. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पास एंड व्हाट Off. पास दिस वाज। वाओ, ऐसे लाइक बटर से अगर आप एक गरम नाइफ निकाल लेते हो ना, कुछ उस तरीके का ये पास था। पीटरसन के एंड रूडुलीत के पैर पे जाएगा। जो प्रेशर से बॉल निकलता है उधर कोई भी गोलकीपर नहीं पकड़ सकता एंड वही चीज हुआ। 2-1 से एक बार फिर से आगे चेन्नई एफसी। बट आज क्या ब्यूटीफुल गोल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। लाइक होता है ना कि कुछ गोल्स देख के एकदम मन में शांति आ जाता है, कुछ उस तरीके का गोल था ये। स्वाद आता है। I mean, एज न्यूट्रल फैन ऑब्वियसली, अगर आप न्यूट्रल हो तो of course, I mean, you do keep your feelings aside when you're on the desk. However, that can't be said in a stadium, TT. So we can excuse you for a stadium, but yes, on desk you've been quite neutral. But I think I really felt in that moment Chennai FC's Rude Hullet was a little offside, but I think the AI had other things. Maybe he made the run in that last moment. But regardless, what a beautiful goal it was. But with Mbappe wanted to go in, ATKMB, but was well read. And now again, Chennai FC, they're off for a counter attack. R9 already making a run on the right. You've got Cherzinho, and he wanted Tall to maybe find few more opportunities, a few ball rolls visible over there. A scrappy attempt on goal, and there you go. The halftime whistle blows, where Chennai FC again have that goal advantage in their favor, but ATK Mohun Bagan, somehow they're keeping the higher possession percentage. या एटीके मोहन बगान शुरुआत से ही कोशिश इनका यही चल रहा था कि वो अपने मिडिल साइड के लाइक मिडफील्ड के ऊपर ज़्यादा बॉल को रखे एंड उसका प्रॉपर फायदा हालांकि उनको मिला भी था अगर हम लोग देखें तो। बट ये गोल बहुत शानदार था। जिस एरिया से उन्होंने फिनिश किया एकदम राइट कॉर्नर पे, वो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने के लिए मिला। बट उसी के साथ बात कर ही रहे थे और प्लेयर्स बहुत जल्दी चाहते हैं नहीं ये मैच पे तो जीतना ही होगा। और आई थिंक एटीके मोहन बगान कोशिश उनको यही करना चाहिए शुरुआती इस हाफ के शुरुआती 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो गोल स्कोर कर दे, क्योंकि जितना ज़्यादा लेट होता जाएगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता जाएगा उनके ऊपर। I think, I really wanted to see that second goal, but the first one that Chennai FC had scored, I mean the second goal the first goal for ATK Mohun Bagan, that I wanted to see in a replay because that was a screamer. But the first one, I really liked how they just combined those skill moves, right? Initially a ball roll and then with that elastico just went in and scored. And this is something that these two players are both capable of. So kind of hard to say actually who had scored that one. But now Chennai FC, they are looking possibly for their potential third, just trying to play around in that midfield. But when you've got a card like Rude Hullet charging at your direction, and that too a team of the year icon card, you kind of are left stranded. But now an attempt on trying to give a cutback, but resorted for a back pass, the players of ATK Mohun Bagan, and seem to have lost control over the ball. हाँ बट काउंटर पे ओ माय गॉड चेन्नई एफसी एक पास, लेकिन नहीं इधर शॉट लेने की कोशिश कर रहे थे। एंड माल्डिनी हम जानते हैं फिजिकली एंड जो माल्डिनी का हाइट है वो भी बहुत ज़्यादा है। सो या उधर पैर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं उनके, तो बॉल छीन लिया माल्डिनी से। बट देखिए प्रेशर हट नहीं रहा, बहुत शानदार एक पास देने की कोशिश था
फ्रूट पे ले, बट वो अभी के लिए तो नहीं हो पाया। बट आई थिंक मुझे लगता है कि अफनान एंड विकी, उनको गेम को थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए। वो पेस पे जा तो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो बिल्ड है, उनका जो Oh. स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा टूटता हुआ इस टाइम पे बुरा लगता है बहुत। Yeah, I mean, you're just on the verge of breaking out for an attack, but हम्म। now the ball has been stolen. So ATK Mohun Bagan stalling and buying a little time to, have few players also come inside that attacking third. And is that a pen? Is that a pen? Wait a second. Oh yes, it is. Yes. ATK Mohun Bagan might have gotten the golden opportunity, but last time we saw a pen that had been defended. This time he goes for the shot and makes no mistake, goes for the top right, and the power is there, the pace is, everything was perfectly aligned. And Mbappe, we know 9.5 out of 10, he never misses, and this time also was the same case. आई थिंक ये फर्स्ट गोल था जो कि हम लोग को शायद इस बार लाइक EISL सीजन 2 पे पेनल्टी से कन्वर्ट होता हुआ दिखा, क्योंकि इसके पिछले 2 पेनल्टीज आई थिंक सेव हो चुके थे। तो या मे बी ये पहला गोल हो सकता है पेनल्टी से। एंड ये कन्वर्जन ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हो पेनल्टी में, फिर आपके लिए बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि जब धीरे धीरे करके हम लोग प्ले पे जाएंगे, उस टाइम पे शायद पेनल्टीज भी हो सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ राइट हैंड साइड से एम्बापे प्रॉपर बॉल कंट्रोल रखते हुए, एंड बॉल पोजीशनिंग बिल्कुल भी इधर खोना नहीं चाहते चेन्नई एनएफसी। बट 23 एडिशन पे मुझे एक चीज जो है वो अभी भी थोड़ा सा ओके, What? ओह व्हाट अ रिसीव, एंड उसके बाद डिफेंडर क्या कर रहे थे, बॉल उनके बाजू में ड्रॉप किया एंड रोनाल्डो आके फिनिश भी करके गए। उसी के साथ 3-2 चेन्नई एनएफसी। बहुत शानदार ये गोल स्कोरिंग, बट आई थिंक मुझे लगता है कि डिफेंडर्स का थोड़ा बहुत गलती इधर जरूर देखने के लिए मिला था एटीके मोहन बगान से। I don't know. I mean, at this point, call it a mistake, call it being tad unlucky, because that was such a nice attempt. But here you can see the replay of that first goal ATK Mohun Bagan scored. Look at this. Look at this. Perfectly, Wow. perfectly just went through and took a shot R9. And would want to see that last goal yet again. But just when we were thinking that yes, ATK Mohun Bagan, they have equalized, Chennaiyin FC says, hey, that's not going to happen. And they score one more. And now with just barely 20 minutes remaining on the clock, Chennaiyin FC are looking for their potential fourth. But this one was the previous goal. The way it was received, and R9 just easily went in. And yeah, like you said, the defenders were sort of kind of absent over there. They were not being, R9 was definitely not being marked. And again, a beautiful cross comes in, and they succeed. एंड चेन्नई एनएफसी बार बार यही कर रहे हैं। एटीके मोहन बगान तब से चेज कर रहे हैं, तब से इक्वलाइज कर रहे हैं, बट अभी तक लीड नहीं ले पाए अभी भी। सो ये एक बहुत बहुत ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस अभी तक देखने के लिए मिला। बट माल्डिनी थे उधर, एंड माल्डिनी हम लोग उनसे तो ऑब्वियसली या फिर इस पूरे टीम से किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि सब टॉप ऑफ द लाइन कार्ड्स है। सो एआई इतना तो लाइक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे जाएंगे, बट हाँ कभी कभार गलतियां हो जाता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए चेन्नई एनएफसी की तरफ से, सो चेन्नई एनएफसी यही चाहते हैं कि एटीके मोहन बगान फुल पेस पे खेले, एंड उन्हीं के पेस पे उन्हीं को ही इधर कहीं ना कहीं ब्रेक किया जा रहा है, उनके पूरे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जब लेफ्ट साइड से प्लेयर निकल रहे हैं, उस टाइम पे थोड़ा बहुत डिफेंडिंग साइड इधर हम लोग को पूरा लेफ्ट साइड पे ही शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। Oh, back we are on with the game. It is a 3-2 scoreline going on, and there you see, Chennaiyin FC making a few attacking changes. Have gotten in the 12th man team of the year card, Haaland on, but now at ATK Mohun Bagan pushing in through the wings, have passed it on towards Arsenio, but no, Ruud Gullit for the rescue, and he saves the day. And now, as things are, well, ATK Mohun Bagan, they've managed to steal possession yet again. So one thing for sure, we've seen two distinct types of play where ATK Mohun Bagan
like the previous matchup, they're kind of relying on those driven through passes, on those cutbacks, whereas Chennai FC, the previous one, they've been kind of going on for those German crosses a lot, and they've been enjoying their time. And just when we thought that Pele would receive it, Maldini just swatted it away. This time, Maldini being aware that he can't concede one more, but Chennai FC still keeping the attack alive with Pele. Went out, I think that was a Oh, reverse elastico, a little heel to heel, wanted to take a shot, but Hakimi is there for the rescue. इट्स टू टफ फॉर एटीके मोहन बगान एज ऑफ नाउ. जिस तरीके से अटैक बन रहा है चेन्नई एफसी की तरफ से, एंड उसी के साथ मुझे लगता है कि सॉर्ट ऑफ लक भी उनके साथ आज है. चेन्नई एफसी जिस तरीके से लेके उनके पास बॉल जाके रुक रहे एंड ऑल, बट लेफ्ट हैंड साइड से थियो हर्नांडेज पहुंच चुके हैं रोनाल्डो के पास. Oh no! अभी भी मौका, अभी भी मौका है. माड्रिड टू हकीमी, हकीमी से खतरा टला है. यस, अभी के लिए तो टल चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अटैक बन रहा था, जो मिस पासेस हो रहे थे, जिस तरीके से बॉल छीना जा रहा था, कुछ भी हो सकता है. अभी भी आई थिंक प्रेशर बना हुआ है चेन्नई एफसी के ऊपर, बट बहुत बहुत ज़्यादा टफ होगा इधर से एटीके मोहन बगान के लिए कि वो इधर इक्वलाइज करे, क्योंकि और सिर्फ 6 मिनट बाकी है. Yeah, and you know, one thing I feel that ATK Mohun Bagan are kind of going all out on their attack, and now this is where their defenses have been pierced, and there you go, no problem for Chennai FC to score one more, and this is pretty much lights out for ATK Mohun Bagan. You can see the descent on their faces, right? They know they have lost this matchup. No matter what the outcome of the third matchup is going to be, will not be enough to secure them any points. So a little bit of a bad day for them in the office, but they're kind of trying whatever it takes. But sometimes I feel, you know, they've been going for little skill moves too many. You know, that one chance where with Jarzinho, I think he went for a ball roll. Maybe that was not necessary, because took so much of that space, and this could be the potential fifth, but no, just hits the crossbar, and there you have it. The full-time whistle gets blown, and Chennai FC are your winners of this fixture, with still one more game remaining in this matchup, but that's just going to be for consolation. क्या शानदार गेम था, एंड इसी वजह से शायद हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि जो फर्स्ट मैच था वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि चेन्नई एफसी वो शुरुआत से ही अपने लाइक कोऑप मैचेस पे ठीक ठाक खेल रहे थे. पिछला मैच उन्होंने जीता था, वो भी बहुत अच्छे खासे एडवांटेज के साथ, एंड इस बार भी वही चीज़ हम लोग को होता हुआ दिखा. तो लेकिन एटीके मोहन बगान, उनको अभी भी ज़रूरत है कि वो अपने कोऑप गेम पे इम्प्रूव करे. हालांकि आज 2 गोल स्कोर करने में भी सफल ज़रूर हुए थे, लेकिन वो उनको ये पॉइंट्स नहीं दिला सकते. सो तीसरे गेम पे क्या होगा, जैसे कि आप कह भी रहे थे कि उससे कुछ ज़्यादा चेंजेस आएंगे नहीं, पॉइंट्स तो नहीं मिलने वाले, बट फिर भी एक कंसोलेशन मैच की तरह वो खेला जाएगा ऑब्वियसली. एंड अगर जीतते हैं तो एकदम एंड ऑफ द टूर्नामेंट शायद उसका कुछ फायदा हो जाए. I think there have been certain improvements, at least one thing we can say from ATK Mohun Bagan. Considering how they played in the last week in their co-op game, this time things were different. But I guess towards that late, scenario, what happens is you kind of tend to go on maybe an ultra attacking or change that formation, and suddenly your defenses are wide open. And in those final few moments, we saw Chennai FC reading that and taking advantage of those moments. And as a result of which, they managed to score not just a 4, but could have been a 5th one in that last dying attack. And there you go. You can see how Ronaldo just takes a touch on that ball. Because in that moment, I don't think TT, this was like something that the defenders could have avoided. It's all about how beautifully Ronaldo just flew his legs over and somehow managed to receive it. But there you have it, folks. Chennai FC have managed to get their first victory in eISL after 2 games that they just managed to get draws out of. So I think the players are going to be happy, and Naveen, the pressure has been eased off of his shoulders, and the same would be said for Vicky as well. He's just going to go all out, have fun. For sure, and mainly
अगर बात किया जाए, आई थिंक हम लोग इतना ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे एआई को लेके, बट वो जो मार्टिनी का गोल था वो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल था, लाइक काइंड ऑफ, अगर हम लोग बात करें उधर आगे भी Yeah. आ सकते थे। लेकिन जो मैंने देखा हाईलाइट पे कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जस्ट चेंज हुआ था, लाइक उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ही मार्टिनी के ऊपर कंट्रोल आया, जिसकी वजह से सारा कुछ फंडा बिगड़ गया। क्योंकि अगर वो नहीं आता तो ऑटोमेटिक एआई के थ्रू पैर निकाल देते हैं प्लेयर्स, और अगर आप थोड़ा पहले भी आते तो प्लेयर के पास कंट्रोल रहता है, तब वो पैर निकाल देते हैं। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आए, वो जो टाइम लगा, वो जो मिली सेकेंड्स कुछ हुआ, उसके बीच में जो होना था वो हो गया था। तो या आज थोड़ा लकी भी कह सकते हैं चेन्नई एफसी को, जिस तरीके से उनको गोल्स मिले हैं, थोड़ा बहुत तो लक उनके साथ था। हालांकि परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार था उनकी तरफ से। Yeah, I think that's there's no doubt about that. हम्म, It was pretty clear. Chennaiyin FC had been the better team. Even in the co-op games, we have been seeing them, making some good runs. They've been utilizing their fullbacks. There have been cases where they did not even shy away from those German crosses, हम्म, the through passes. I think the synergy has been getting better, and I think this was the moment where they were just waiting that we get to play once more and show what we are made of. Finally, a champion's performance being showcased. But right now, we are heading in, ladies and gentlemen, for our final game of this fixture. It is going to be Vicky against Naveen. Vicky representing ATK Mohun Bagan from left to right, that green and red, whereas we've got Naveen in that white from Chennai FC's kids. And there you go. This could be a possible goal, and it will be again poached. And Naveen, in fact, cannot believe it. And I mean, this goal, uh, it हाँ। reflected. बट आई थिंक ये ज़रूरी था एटीके मोहन बगान के लिए, क्योंकि अभी तक का उनके लिए सिचुएशंस उतना कुछ खास गया नहीं था। बट फाइनली उनको एक गोल का लीड एज ऑफ नाउ मिला है। लेकिन देखिए, ये गलती अगर आप करोगे फिर तो मुश्किलें होगा। हालांकि इस बार के लिए वर्जिल वैन डाइक बचा दिया, वैसे गलती भी शायद उनकी तरफ से ही हुआ था। सो वो गलती भी की, फिर उसके बाद उन्होंने उसको सुधार भी लिया। बट ये सब गलती बार बार फिर से एक बार तो पासेस जो है वो इम्प्रूव करने की जरूरत है। लॉन्ग पासेस वी नो कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, बट क्या शानदार थ्रू खिलाया गया था लेफ्ट विंग के ऊपर। रोनाल्डिनियो डांस कर रहे थे बॉल के साथ, बट एक बैक पास, क्या मौका बनेगा सही टाइम पे। एक बार फिर से वर्जिल वैन डाइक उधर एज अ सेवियर मौजूद रहे। Oh yeah, and at this point, well, we have to see that what is our eISL Season 1 champion Naveen going to do, because he's taken aback. The first goal was kind of unexpected, just coming out of a deflection there. And these are the moments where, we should ask our production to make a segment of goalkeeper fails also. And now, as we were just talking, a beautiful pass given towards Mbappe, and Naveen seals it. It was a very straightforward goal. No involvement of any kind of skill moves, anything at all. Simple या pass, found the right player on the run, and he scored an equalizer. बिल्कुल। एंड कभी कभार जो है वो ज़रूरत होता नहीं है, आप जितना सिंपल रखते हो उतना सिंपली आपका गोल आ जाता है। एंड वही चीज़ कहीं ना कहीं इधर दिखा। बट मेसी को इधर बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन करके खिलाया जा रहा है। एंड आई थिंक इंस्ट्रक्शन दिया गया है शॉर्ट पासिस के लिए। इस बार बेहतरीन जगह पे बेलिंगम टू रोनाल्डिनियो, शॉट लेने की कोशिश था बट बीच में मार्टिनी आ गई, जिसकी वजह से कंट्रोल उतना खास मिला नहीं। बट चेन्नई एनएफसी के कुछ ना कुछ करके उनको गोल्स मिल रहे हैं। वो बिल्कुल भी, ये जो आखिरी गेम है ये भी वो जीतने नहीं देना चाहते। Oh. दूर से मेसी, बट वेंडेसार को टेस्ट नहीं कर पाए। I think it was a finesse shot Hmm. and not a trivela. He took it with his left foot, but now again out for a break on R9. Decides that no, did not have enough men ahead. Will go give a pass towards Bellingham. Again stolen by R9, and this time Naveen making sure he doesn't give those openings. And now out on a Oh. break with Jairzinho. We know that pace, it might just beat Virgil van Dijk. At a beautiful pass, and now unlucky takes another shot. Oh! Wow.
फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एटीके मोहन बगान जिस तरीके से डिफेंस के लिए गए थे वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव था, जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर टूटा एंड आखिर में नवीन के तरफ से वो स्कोर नहीं कर पाए। सो सब मिला के अगर बात किया जाए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग गेम चलता हुआ फिलहाल के लिए। एंड रोड हुलीत तो राइट हैंड साइड जार्जिनियो वन मोर टाइम, रोनाल्डो रन निकालते हुए फाइनली टुवर्ड्स रोनाल्डो, बट वर्जिल वैन डाइक मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ सेकंड्स का जो है वो डिले कर दे रहे हैं नवीन बार बार। आई थिंक पिछली बार भी वही हुआ था, तो ये डिले अगर नहीं होगा तो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं ये मोहन बगान। एंड अभी तक जिस तरीके से विकी खेल रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस उतना कुछ खास नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है थोड़ा नर्वस होके खेल रही है, या फिर जो वो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। ये इधर no. Beautiful, beautiful, and Tite is absolutely stupefied because his favorite card, Lionel Messi, scores and direct, shot, and did not even go for that first touch or anything. But what a beautiful goal it was! And just when we were thinking that maybe Vicky might be lacking that composure, he shows that nah, you guys are wrong over here. And now just with that kickoff again, Naveen wanted to look really deadly, but Vicky did not let that happen. And suddenly, ATK Mohun Bagan have taken this lead in this matchup. And Ruud Gullit fighting for the ball against Lionel Messi and went out. ATK Mohun Bagan would want to capitalize, have triggered 9 and for a run. Lionel Messi get a pass on towards Ronaldinho, but no, Maldini making sure that the threat was averted. एंड जो पिछला गोल था उसमें नवीन अपने डिफेंडर को आगे लेके चले गए थे, बट इस बार देखिए नवीन की तरफ से अटैक बन रहा है, बट पासिंग ऑप्शन ज्यादा थे नहीं, इसी वजह से बैक पास। बट इस बार रोनाल्डो टू जार्जिनियो एंड फिनिश करेंगे विद द गोल। चेन्नई एफसी बार फिर से इक्वलाइज कर चुका है। सो शुरुआती 38 मिनट्स के अंदर 4 गोल्स हम लोगों ने देख लिया एंड बहुत सारी गलतियां आज इस गेम की तरफ से हम लोग को दिख रहा है। एटलीस्ट इस मैच पे तो बहुत गलतियां नजर आ रहा है, तो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग बात करते हैं विकी की तरफ से तो ऑब्वियसली उनको भी, बट नवीन को भी, क्योंकि जिस तरीके से वो सेकंड गोल कंसीड किए थे उनके डिफेंडर के ऊपर गया था एंड वो अपने डिफेंडर को एडवांस लेके चले गए, जिसकी वजह से इधर बीच में प्लेयर पूरा खाली थे। तो ये चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, नहीं तो बाद में टूर्नामेंट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। Oh, this is again a beautiful chance created. Whiffed, missed. Vicky, he would be shocked by what just happened. But one thing, TT, we have seen Naveen has been exploiting those through passes so well. Again, a chance potentially just getting built up over here, pressing through, and a beautiful receive by Ronaldinho. But both Virgil van Dijk and Hakimi ensuring they took the right measures. The run a little too ahead over there, could not give the pass in the right opportunity, and when the iron was hot actually, and now still retaining possession, but finally given away. And Naveen does not want to take any chances. He knew this was half-time whistle was just about to blow on the horizon, and it's a 2-2 scoreline. But ATK Mohun Bagan, like always, they have been keeping the possession stats in their favor, but this time at least they have equalized. एंड उसी के साथ इस बार वो पहले लीड ले रहे हैं, ये चीज एक पॉजिटिव है ऑब्वियसली उनके तरफ से। एंड ओवरऑल अभी तक जो हम लोगों को पता चला है कि ये गेम सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग गेम अभी तक चल रहा है। 14 गोल्स हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड आई थिंक और भी ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी मैचेस हम लोगों ने देखे हैं फर्स्ट हाफ पे जितने गोल्स हुए उससे ज्यादा ही गोल्स हम लोग को सेकंड हाफ में देखने के लिए मिले हैं। सो क्या एक बार इस मैच के ऊपर भी वही चीज देखने के लिए मिलेगा? एंड अगर होता है तो कितने गोल पे जाके रुकेगा ये गेम, क्योंकि ऑलरेडी 4 गोल्स तो आ चुके हैं फर्स्ट हाफ के ऊपर। बट आई थिंक मुझे लगता है ये जो गलतियां हो रहा है दोनों ही तरफ से, इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम्स इसी तरीके से जो गलत पासेस है वो होते रहेंगे और गोल्स भी हम लोग को आता हुआ देखने के लिए मिलेगा। आई थिंक it's
it would be fair to say that this has been such an amazing start to this particular week in our Yeah. eISL, and you know, it's just a goals galore as now Naveen offside and a little unlucky there, but yes, it has been such an end-to-end games, right? At least in those Hmm. final moments of the second half, that's where we see teams flustering up a little bit, especially ATK Mohun Bagan. But Chennaiyin FC, they have always been there to capitalize on it and have been scoring a lot of goals out of that. So 3, 4, and now let's see how many goals Naveen can score. But right now it is going to be Vicky who's on the attack. A beautiful Ooh. heel to heel, tried to go in, but no, the defense like a rock, like a mountain, making sure Naveen that he gets the ball back. Not just that, he had some passing options through his Theo Hernandez, but decided to keep it around that central area. But now will capitalize his blistering pace into action. Now we'll have to see who does he pass it on to. It's back and forth, through and through pass, heel to heel, tried to go in, but even Maldini from Vicky's side is defending it off. या एंड थोड़ा सा पीछे थे जिधर से उन्होंने हिल टू हिल स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से माल्टेनी के लिए और इजी रहा, नहीं तो माल्टेनी नटमेग भी इधर हो सकते थे बाय द वे। बट इस बार बॉल कंट्रोल है एटीके मोहन बगान के पास, थ्रू आउट मेसी, थियो हर्नांडेज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एकदम प्रॉपर पोजीशन पे मौजूद थे। एंड नवीन की अगर बात किया जाए, बहुत सारे ऐसे मौके बने थे जिधर एक अच्छा खासा पोजीशन बन गया था एटीके मोहन बगान के लिए, बट उन्होंने इधर डिफेंस किया। पर देखिए बॉल कंट्रोल एंड पोजीशनिंग जो है वो एटीके मोहन बगान का ही हम लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिले पिछले 3 गेम की अगर बात किया जाए। यूजुअली ओवरऑल एवरेज तो वो चीज़ एक बार फिर से इधर कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, बट इस बार बॉल के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखने की कोशिश था चेन्नई एफसी का, जो कि फिलहाल के लिए छीन लिया गया एटीके मोहन बगान की तरफ से। Oh yeah. No, at this moment, an L2 pass being given, outside footed pass. It seems like he's just waiting for his moment to come. And we're yet to find a winner to this game. Full pass on towards Messi with Ronaldo. Went in for that heel to heel. Tried to get in through, but Naveen just being ever alert and ever alarmed. Once again, a quick reminder for all the folks that are watching this broadcast right now. No matter what the outcome is, especially for ATK Mohun Bagan fans, even if they win this game, this is gonna change nothing, as now Naveen yet and again on with his attack. A beautiful cutback towards Theo Hernandez to R9, and there you हो go. हो हो Scores a goal. Beautiful chain of passes. Knew exactly how he wanted to build this attack and converted that into reality. And Naveen, he was one of the most consistent players, or rather the most consistent player in previous seasons eISL. This time had a very shaky start, but seems like he's getting back to his old grooves. व्हाट अ गेम फ्रॉम नवीन। एंड जिस तरीके से इनका स्टार्ट हुआ था टूर्नामेंट के अंदर, थोड़ा कंसर्न ज़रूर थे, बट आज के इस परफॉर्मेंस के बाद खुश ज़रूर होंगे। बट अभी भी देखिए टाइम है, मौका है, रोनाल्डो को मिला है बॉल, थोड़ा टाइम ले सकते थे, वो आगे भी जा सकते थे बाय द वे, लेकिन वो चीज नहीं हुआ। और थोड़ा उनके पास मौका था कि वो आगे बढ़ते, बट यस सब खत्म. Oh God, oh God. I think we need to have a quick chat with the developers of this game. Things need to get fixed because our viewers otherwise will be infuriated with what's going on. I mean, those dying moments always are missing that action, because we could see another goal in the making. Maybe that could have been the equalizer, but you know what? We've got an amazing production team who is going to make us, or rather, ensure that they give us the score sheet and let us know what happened to that game. But yeah, I think this is one excusable game because we knew no matter what the outcome would be, Chennai FC had already secured 3 points for themselves. So they will be pretty happy with their result, because for the past 2 games that they had come in and played, all they could muster was just a draw. But this time, getting those victories, and if this is a whitewash, then they would be even happier. But for ATK Mohun Bagan and especially their fans, with the way ATK Mohun Bagan started their journey against Odisha FC,
beautiful goals. They had managed an emphatic victory. Then we were thinking that yes, this season could be the season where things change for ATK Mohun Bagan. This is a season where these players can actually start going and win. And suddenly in the last two games, of course, the fixtures were quite difficult when you go up against a team like Mumbai City FC and then Chennaiyin FC. So it's going to be a little tricky, and they have had to face back-to-back two losses. I'm pretty sure, TT, you're in the back of your minds having that gleeful smile. But your club isn't doing pretty well either. I know that, but होता ना like थोड़ा बहुत डर्बी फैंस बाय द वे लाइक उसको लेके हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन उस जगह पे अगर गोल स्कोरिंग की अगर बात की जाए, जैसे कि हम लोगों के पास स्टैट आया था कि 14 गोल्स ऑलरेडी स्कोर हो चुके थे इस मैच पे। तो अभी तक अगर देखा जाए इस पूरे eISL सीजन 2 पे कुछ टीम्स ऐसे हैं जो कि अपने ओवरऑल सब मैचेस मिला के भी इतने गोल्स नहीं किए हैं जितने सिर्फ आज के इस मैचअप पे हो गए हैं। सो ये आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस आता हुआ देखने के लिए मिला है। एंड ऑब्वियसली बेहतरीन मैं कह सकता हूँ इन द सेंस, बट ऑन द अदर हैंड उतना भी बेहतरीन नहीं अगर हम लोग डिफेंसिव वे पे देखें एंड इन क्लब्स के तरफ से अगर देखें, क्योंकि जिस तरीके से गोल कंसीड किया गया है उस तरीके से कोई भी और अगर टीम रहेंगे जिनका डिफेंस स्ट्रांग रहेगा और अटैक भी ऑब्वियसली स्ट्रांग रहेगा, तो उस जगह पे जाके इनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और हो सकते हैं कि वो गोल स्कोर तो कर देंगे एक दो, या फिर लाइक उसके बाद जो कंसीड करने के नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से अपने डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है दोनों ही टीम्स को। Yeah, I think I would also agree with you, because when you're scoring a lot of goals from both the sides, the defense needs to get worked on. And yes, this is not just 14 when we knew that just before that third goal from Chennaiyin FC came in. So now it's a new record again being set, broken by the same club, and between the same clubs, in fact. Now 15 goals is the marker last we saw. And in those final moments, if we get to see one more goal or a few more, then they're setting the bar pretty high. So I think both the clubs put their hearts out. They did their best. It is I think ATK Mohun Bagan taking a few risky decisions, and honestly, had I been in their place, I would have also done the same, because when you are trailing by I think one or two goals, that's where you kind of go all out. Either it is you equalizing, or else you go on, because I think that matchup against East Bengal FC versus Kerala Blasters FC, that co-op game, if you can remember that 90th minute equalizer, Yeah. that was absolutely, I can't describe in words, because it has to be one of the best matchups, and them being so unlucky there, Kerala Blasters FC getting so close but still so far away. Shubham is trying to win his games. Last time he could not. Lokmanu was doing whatever he could possibly do, and still, Benno 7 just edged out. I think even Shubham lost to Akshat. So last time we got a lot of surprises, but this time there you see, no changes again. 3-2 being the scoreline. Naveen getting that victory, his first win coming through, and finally Chennaiyin FC. One thing for sure, at least this team hasn't been beaten by anybody. It's been either draws or it's been a W. या एंड विद दिस विन आई थिंक चेन्नई एफसी पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी एक बहुत अच्छे पोजीशन पे जाने वाले हैं। एंड विद दैट उनका जो गोल डिफरेंस है वो भी बहुत अच्छे खासे नंबर्स पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट मैच 1 गोल से, सेकंड मैच 2 गोल से, एंड थर्ड मैच विद 1 गोल लीड। सो टोटल 4 गोल्स का लीड इनका बना हुआ रहेगा पॉइंट्स टेबल के ऊपर। And let's find out who the MVP is going to be, because Tikka and Naveen both scored 3 goals each. So it's going to be difficult, and comes to Naveen in the end. Maybe he scored an extra goal in that co-op matchup, as a result of which he's been awarded the MVP of this entire matchup. So Chennaiyin FC finally, getting their W. They were tired with all those Ds, all those draws to their name. At least the silver lining was there was no else. But ATK Mohun Bagan, after starting the campaign with a beautiful manner, have messed up the next 2 games. Still, I think this team looks quite promising. And as as we progress through the league stages, ATK Mohun Bagan, they are definitely gonna bounce back
And these are concerning times because ATK Mohun Bagan, I mean, right now they're not in the worst of situations. I think Hmm. this is where you have to get in clubs like Kerala Blasters FC and even Odisha FC, as a matter of fact, because both these teams have played, Odisha FC has played 2 games, they've Hmm. lost 2 games. Kerala Blasters FC are yet to win one. But all these things, they will go on. But right now, ladies and gentlemen, we are finally done with this matchup. Right now, what we will do is take a short little break, and coming after is another beautiful one waiting for you.